Hello class 10. So today we are going to do some important questions from chapter 7. It is coordinate geometry. You have already used distance formula, section formula, midpoint formula in this chapter. So basically we are going to use these formulas only. The thing is only the format or pattern of the question has changed a bit. Clear? So let us say this is the point A and this is the point B. Coordinates of point A are 2, -2. Coordinate of B are 3 and 7. Let's say this is the line L in which its equation is given as 2x plus y minus 4 is equal to 0. Say C is the point on this line having coordinate x and y, which is dividing AB in the ratio k is to 1. Okay, now I have to write this in a statement line as well. So let point C having coordinate x and y divide A B in ratio. क्या ratio हम लेंगे? K is to 1. अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, you take that mn or m1 m2 formula, but that is actually a bit lengthier. If we have to find the ratio, in that case taking ratio as k is to 1 is always easier, shorter and convenient to use. Now I can just write section formula that I'm going to apply in this question. It is k into x2 plus 1 divided by k plus 1. Sorry, it's k x2 plus x1 because I am multiplying 1 with x1, and y, it is k y2 plus y1 divided by k plus 1. So if it is like weightage of 2, 3, 4, in that case we have to write the formula always. And in 1 marker, it is your choice. If you can manage time, then it's okay. Otherwise, you are going to get 1 mark for the answer only. Now, I'm going to apply this formula to find the coordinate of C. So, coordinate of C के लिए x को जब मैं यहाँ पे use करूँगी, तो देखिए k into x2, तो k into 3. So, I can write 3k. Then 1 into 2. So, it is 1 bracket 2 and divided by k plus 1. Similarly, we can find coordinates of y. Y हमारे लिए हो जाएगा k y2. So 7 into k, 1 into -2. So 1 minus 2 and divided by sum of ratio, it is k plus 1. Now the point C, which is having coordinate x and y, lie on the line given by the equation 2x plus y minus 4 is equal to 0. So it means the coordinate of C will satisfy this equation. I'm going to say we are going to put values of x and y that we have find in this as coordinate of C. So using values of x and y in given equation. Clear? अब मैं क्या करूंगी, 2 within the bracket x की प्लेस पे डालेंगे 3k plus 2 upon k plus 1. फिर प्लस y की प्लेस पे मैं क्या डालूंगी, 7k 1 into -2 होता है divided by k plus 1 and last term is -4 is equal to 0. Now, in the next step, I have to take LCM, and if you want, you can just shift the constant on the other side. But if you don't want, then you can just keep it here as well. So 2 bracket 3k plus 2, मैंने just bracket open किया है, plus हम लोगों ने LCM जो लिया है, this is k plus 1. And again, it is getting multiplied with 1, so I can write it directly 7k minus 2. And in 4 denominator, there is 1 only, so minus k plus 1 within the bracket. Now, this is one of the error that generally students make, this negative sign. So they just write it minus k plus 1. And if you use the bracket, then you will always remember that there is a negative sign outside the bracket. So minus 4 will get multiplied with k plus 1. And this is equal to 0. Now, denominator will get cross multiply on the right side and it will become 0.
Now I will open the brackets as well. So 2 3s are 6k plus 2 2s are 4 plus 7k minus 2. Just open it, minus 4k and minus 4 is equal to 0. अब वेरिएबल्स को इकट्ठा ले लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको इकट्ठा क्लब कर दीजिए. And also plus 4 and minus 4 is getting cancelled. So just cancel it. Don't complicate your calculations. So 6 plus 7k minus 4k. So it is 3k and 6k. So 9k. And in the constant, I'm left only with minus 2. So I will shift it on the right side. It will become plus 2. And I get the value k as 2 by 9. And you know, we get the answer. So the ratio in which the line 2x plus y minus 4 divides the line segment given by A, B is 2 is to 9. Yippee! We got the answer. And I just request you to block the answer so that teacher actually जो आप इतना काम करते हैं ना, so I don't want you to mix your answer somewhere in the calculation. So it should be clearly visible if you want full marks. देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा, मैंने आंसर को ब्लॉक भी किया. There is no cutting, proper usage of formula. बताइए मेरे मार्क्स टीचर क्यों काटेगी? नहीं काटेगी. मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है, बट आई नो नहीं काटेंगी. क्लियर? हाँ जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, देन all the presentation, formula and answer block. It says the find the center of a circle passing through points. मेरे को 3 points दिए हैं. देखिए, find the center of the circle. तो what I can do, just draw a circle. देखिए मैं फ्री हैंड सर्कल बना रही हूँ तो प्लीज प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय टेढ़ा मेढ़ा सर्कल, बट यू कैन मेक इट विद अ बैंगल और यू कैन मेक इट विद अ कंपास. आई कांट डू हियर ऑन द बोर्ड. Okay, so just take 3 points on the circle. So मैं जो 3 points लेने वाली हूँ, I can make use of my name MONA. Wow, clear? So I just use my alphabets that actually I owe in my name. So MONA. And now the 3 points which are on the circumference are M 6 comma minus 6, and then N 3 minus 7, and then A 3 comma 3. Okay, and I have to find the center of the circle, that is O. Let's say its coordinates are x comma y. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो point M and A are lying on the circumference of the circle, and if the points are lying on the circumference and we are finding the distance from the center, so what are these? Yes, these are the radius. Very good. So आप यहाँ पे लीजिए, let O x y be the center of the circle. Let OXY be the center of the circle. And point M, N and A are on the circumference of the circle. On the circumference of the circle. तो जो भी इंफॉर्मेशन जनरली होती है, जनरली आई लाइक टू राइट इट हियर so that firstly you will read the statement carefully, what is given to you, you can write it here, and what you have to find you can just point out, so that generally you know, if you know what you have to find then you will move into that direction. But अगर आप सीधा question read करेंगे and you start writing without the full awareness of what you have to find, we will land nowhere actually. Clear? So MO, NO, AO are all equal radius of the circle. And I can also say if 3 things are equal, then their squares will also equal. So I can write MO square is equal to NO square is equal to AO square. अब मैं क्या करूंगी, मैं ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं, 2 डिस्टेंसेस को यूज करते हुए आई विल लाइक टू frame 2 equations because I have 2 variable x and y. If there is 1 variable, then 1 equation is sufficient to find the answer. If there are 2 variables, then we have to frame 2 equations. But in this question, you can frame 3 different equations, but we don't need actually 3. Now, the point is which 2 equations will help you most. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ये बोल रहा है n जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 3 - 7 है.
ए जो है इसके कोऑर्डिनेट 3,3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, सो वन डिस्टेंस आई वुड लाइक टू चूज एन ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, and the second distance I would like to take either NO MO चलेगा और MO AO, that is also fine. So it's my choice which two distances I need to compare. So let's take MO square is equal to AO square. ठीक है, but for sure the first equation I don't want to change with any of these. क्लियर है ना, क्योंकि एन और ए जो पॉइंट है इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एंड अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ. अगर आपका ये कोऑर्डिनेट सेम है देन हाउ कैन इट हेल्प टू सिंप्लीफाई आवर इक्वेशन so that you can find the answer much more easily. So NO की प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Yes, this is the distance formula. So it would be better if I write it here at least once. So distance formula. Generally, teacher expect you to write the distance formula. So distance formula is under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Clear? So I'm just going to use this formula, but as I write whole square, no square, AO square, so there is no need to write this square root symbol. So NO की place में मैं क्या लिखूंगी? X minus 3 whole square plus y minus of minus 7. So I can write it plus 7. So if you want, you can write negative of negative, and you can just directly write plus sign. AO, AO के लिए हमें क्या लिखना होगा? X minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. ठीक है ना? So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब जो मैंने आपको मैजिक की बात बोली थी, that's why कि I was very insistent on taking NOAO because x minus 3 whole square will get cancelled from each side. देखा, so I just vanish one of the variable. Look now, question कितना easy हो गया. We are having only one variable, so one equation will give us directly one of the values of y. So just open whole square. अब कभी कभी you know 8th 9th 10th में आते आते बच्चे y plus a plus b का whole square a square plus b square करते हैं, जो कि मेरी क्लास में राघव बहुत करता है. So राघव please y square plus 2 sevens are 14 y plus 7 sevens are 49 is equal to y square plus 9 minus 3 twos are 6y. Just cancel the square stuff and take variable on one side, constant on the other. So 14y minus minus plus 6y, because I'm just going to shift minus 6 on the right side, left side, and 9 minus 49. Sometimes if you want to save step, you can directly calculate while shifting, but sometimes you can make mistakes, so you can avoid that step as well. So 16 plus 14 plus 6, 20y, and this is minus 40. Oh my god, I got one of the variable y, and final answer है ये y. तो basically I will not avoid this ब्रैकेट थिंग. क्लियर? चलिए जी, अब नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं. हम लोगों ने जो दूसरी इक्वेशन ली थी, वी विल जस्ट टेक MO स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर. सो जस्ट मेक यूज ऑफ दिस वन. सो x minus 6 whole square, x minus 6 whole square and y minus of minus 6 है ना, तो y plus 6 whole square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन में जैसे प्रीवियस हमने जब इक्वेशन फ्रेम की थी तो x माइनस 3 होल स्क्वायर दोनों साइड पे कैंसिल हो गया था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा. तो आई हैव टू ओपन the whole four brackets for a plus b का whole square and a minus b का whole square. And in fact I would recommend if you can write this identity on the right side. So this is a square plus b square minus 2ab, y square plus 6 square 36 plus 6 2 is 12y, and on the right side it is x square plus 9 minus 3 2 is 6x plus y minus 3 का whole square मेरा होता है y square plus 9 minus 3 2 is 6y. क्लियर? अब जो जो चीजें आपकी लेफ्ट राइट में कैंसिल हो रही हैं, firstly cancel those values, because if you cancel the equal things on both sides of the equation, then your equation become a bit short, so it would be easier to handle it.
अब चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ भी कर सकते हैं, दैट कैन बी अ गुड प्रैक्टिस। सो 36 72 और यहाँ से 9 प्लस 9 18। सो मैं 18 को इस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ एंड वेरिएबल्स एक्स और वाई को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास -6x ऑलरेडी राइट साइड पे है और ये -12x शिफ्ट होके यहाँ पे आके +12x हो जाएगा। देन यहाँ पे मेरे पास है -6y और यहाँ से 12y व्हेन आई गेट शिफ्टेड ऑन द राइट साइड, सो इट विल बिकम -12y। सो यू कैन से -6 plus 12, so 6x. So -6 minus 12 minus 18y, and here it is 4 and then 5. And if you think you can take 6 common, so 6 minus 6 3 is 18, so 3y is equal to 9. अब हमारे पास y की जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x -3 -2, तो -3 -2 +6 होता है, +6 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। So the final answer that we get in this question is Santa. Final answer for Santa O. Its coordinates are 3 and -2. Its coordinates are 3 and -2. So this is our final answer. अब इस क्वेश्चन में एक और शॉर्ट में जो यूज कर सकती थी कि मेरी x की वैल्यू -2 आ चुकी थी, तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन फ्रेम करते हुए उस वैल्यू को यूटिलाइज भी कर सकती थी। तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, यू हैव टू वर्क सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, so that you can get full marks without any difficulty. So let's move on to the next question. I'm doing all those questions which are actually very important. Okay, ध्यान रखना, these are actually important questions for highest weightage questions of chapter 7. अरे वाह, this is again a bit different concept that we haven't studied yet. So the two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of other two vertices. So let's draw the square thing. Let's draw the square. अब इस स्क्वायर के इसने बोला टू ऑपोजिट वर्टिसेस आर -1 and 2, एंड ऑपोजिट लेना है ना, तो मैं यहाँ से ये वाला लेती हूँ एंड आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू। सो अदर टू को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, and this is x dash y dash, or you can say a b p q, whatever is comfort for you. So a b c d be the square. ओके अब यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि 4 वेरिएबल्स निकालने हैं, तो 4 इक्वेशन तो मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है, ये तो मुझे पता है, मैं 4 इक्वेशन बनाने से नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको अपना शॉर्ट करके काम को किसी भी तरीके से आसान करना है। वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बी सी डी, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल ले लेती हूँ, DC और BC में कोई रिलेशन है? Yes, these are equal. So I can make one equation from there. Now for second equation, DB is the hypotenuse. So DC, BC and BD are actually joined together with a relation called Pythagoras theorem. So I will frame second equation with the help of Pythagoras theorem. ठीक, अब दो इक्वेशंस आ गई, दो ही वेरिएबल मैं यहाँ पे पहले निकालूंगी और जो हमारा मैजिक आएगा, ये दो जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प अस विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एज वेल। ओके जी, हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन है तो थोड़ी तो लेंथ आप सोच ही सकते हो क्वेश्चन की होगी। तो चलिए जी, ए बी सी डी इज द गिवन स्क्वायर। ए बी सी डी इज द गिवन स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों का DC is equal to CB, opposite sides of square. Yes, sides of square is also sufficient. Sides of square. और अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये दोनों CD and CB are equal, definitely their squares will also be equal. अब ये करने के बाद we will just put the values. So it will become, देखिए, x minus of -1, so x plus 1 का whole square, फिर y minus 2 whole square, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा पार्टी, y minus 2 whole square, एंड cb के लिए हम लिखेंगे x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square.
अभी हमने एक और क्वेश्चन ऐसा किया था जहां पे हम लोगों का y plus 2 whole square on the left side was getting cancelled with y minus 2 whole square on the other side. So I want to use a different color. कट करने में बड़ा मजा आता है यार, ठीक है ना। अब देखो ना हमारा इक्वेशन कितना छोटा हो गया, इसका मतलब हम आंसर कितना कन्वीनियंटली निकाल पाएंगे। सो दिस इज x plus 1 whole square is equal to x minus 3 whole square. Now some of the students are asking, can we cancel the square on each side? No, you can't be two. If you will cancel, then you will miss one of the values. You can actually miss. So let's write it as x square plus 1. I'm just using identity 2 and 1 in this equation. So this is equal to x square plus 9 minus 6x. अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका 2x प्लस 6x हो जाएगा एंड 9 और 1 उधर आके सब्ट्रैक्ट कर देगा और 8x जो है 8 के इक्वल आ जाएगा। उससे फायदा क्या हो रहा है, x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, अब कभी कभी अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन कहीं अटक ही गया, मान लो पेपर में हो ही नहीं पाया तुमसे, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो जितने स्टेप तक या हो सकता है आधा एक जो भी बीच में से आंसर आपके पास निकल पाया है, जस्ट मेंशन दैट आंसर, कुछ तो मार्क्स मिलेगा ना। कभी कभी बच्चे जब बिल्कुल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर में छोड़ के आते हैं ना, मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ, प्लीज डोंट डू दिस, यू शुड राइट वट एवर यू नो अबाउट दैट टॉपिक, है ना। ऐसा तो होता नहीं पूरा साल पढ़ के आपको वो टॉपिक ही नहीं पता ये है क्या। गिव योर बेस्ट, एटलीस्ट ट्राई। अगर बाई चांस वो गलत होता है तो गिव टीचर दी अपॉर्चुनिटी टू कट इट, एंड इफ यू थिंक ठीक हो सकता है तो हो सकता है यू कैन गेट सम मार्क्स और मे बी फुल मार्क्स इफ दैट इज करेक्ट। 1 आ गया, अब यहाँ पे मैं x का वैल्यू 1 डालूंगी तो इट विल बिकम 1 y। नाउ जस्ट यूज इन right triangle DCB using Pythagoras. Pythagoras का मतलब hypotenuse square is equal to the sum of the square of the other two sides. So DB की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3 minus of minus 1 means plus 1, तो 3 plus 1 का whole square plus 2 minus 2 का whole square is equal to, now DC के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। ये जो नेगेटिव नेगेटिव टू साइंस होते हैं ना, बच्चे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, तो प्लीज बी अ बिट कॉन्शियस। सो y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई तो 2 माइनस 2 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। अब इसको आगे वाले स्टेप तक ले जाने की जरूरत नहीं है, पूरा जीरो बन चुका है। सो 3 प्लस 1 4 स्क्वायर। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट 16 एज वेल। सो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4y प्लस यहाँ से 3 माइनस 1 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4y। ओके, अब यहाँ से अगर आपको लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो यू हैव टू ऐड। सो लाइक आई एम हैविंग y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, then 4y both are of negative sign, तो minus 8y, and then 4 plus 4 8 plus 4 12, देखो 1 2 3 4, so these are 4 times 4, this is 16 and 4 का स्क्वायर 16, so 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो 2y है, आई कैन टेक इट कॉमन, सो y 2y कॉमन लूंगी, अंदर आएगा y minus 4 and this is equal to 0. Now we are having two factors and their product is equal to 0. If I put both the factor individually equal to 0, because if the product of two number is 0, then one of them should be equal to 0. From the first factor, I can say y is equal to 0, and from the second factor, I can say y is equal to 4. And you know what? We get the answer both coordinate of A and C. तो हम लोग क्या करेंगे, जो C है, x की वैल्यू तो 1 है and corresponding y is 0, and again coordinate of point A can be x की value 1 रहेगी and coordinate of y will be 4. So the true answer, that is coordinate of opposite vertices of the square are 1 0 1 4. I hope मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। If you want similar question, then just comment me. Thank you so much.